Hello everybody, welcome to JURISCentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the judgments of this month, that means January 2022. बिल्कुल लेटेस्ट सेशन ये होने वाला है. इस महीने के जितने भी अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दिए जा चुके हैं बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, आज मैं उन सारे जजमेंट्स के साथ आपके लिए ये सेशन लेकर आई हूँ. तो आप देखिएगा इसे बिल्कुल एंड तक. तो चलिए शुरू करते हैं. आई हैव ऑनली चूजन फ्यू जजमेंट्स, ज्यादा नहीं है, तो ये सेशन जल्दी समाप्त हो जाएगा. तो सबसे पहला आता है आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बहुत ज्यादा न्यूज में ये देखने को मिल रहा है मैरिटल रेप. तो इसी से रिलेटेड ये केस है. द दिल्ली हाई कोर्ट इज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस चैलेंजिंग द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पेनल कोड व्हिच exempts forceful sexual intercourse by a man with his own wife from the offense of rape. The petitions against marital rape have been filed by NGOs, RIT Foundation, All India Democratic Women's Association and 2 individuals. तो इन सारे मिलके एक पिटीशन डाला है. तो मेन केस है इसका RIT फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें सेक्शन 375 के जो एक्सेप्शन है उसे चैलेंज किया गया है. तो जान लेते हैं ये एक्सेप्शन है क्या. सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज own wife, the wife not being under 15 years of age is not rape. यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी एज दिया गया है जो है 15 years. तो अगर द वाइफ अगर वो 15 साल के नीचे है और इसके साथ अगर उसका पति अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इन दैट केस वो रेप माना जाएगा. लेकिन अगर 15 साल से अगर अबव है तो रेप नहीं माना जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था. द नेम ऑफ द जजमेंट इज शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये स्टैट्यूटरी एज को इट वाज इंक्रीज टू 18 years, मतलब अब 15 से लेके 18 साल तक बढ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. ये जो मैंने अभी जो केस कहा आपको शक्ति वाहिनी केस, इसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था, इस एज बार को थोड़ा सा एक्सीड किया गया था. लेकिन स्टिल ये अभी भी एक ऑफेंस नहीं है. The petitioners contended that marital rape exception provided under section 375 of the Indian Penal Code violates a woman's right to dignity, personal and sexual autonomy and her right to self-expression enshrined under the Constitution of it. तो ये दलीलें दी गई है by the petitioners that the exception to section 375 actually violates a woman's right to dignity as well as her sexual autonomy among other things. Previously, senior advocate Colin Gonzalez, appearing for one of the petitioners, argued that marital rape is the biggest form of sexual violence against women, which is never reported, analyzed or studied. ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि marital rape जैसे केसेस को कभी रिपोर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि अब रिपोर्ट करके भी क्या फायदा. ऑलरेडी देयर इज एन एक्सेप्शन. और कोई भी महिला जो 18 साल या उससे ऊपर है उसके साथ अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज अगर इस टाइप से कोई अगर एक्ट किया भी जाता है so it's not a crime. On the other hand, the Delhi government submitted that the exception to section 375 of IPC pertaining to non-criminalization of marital rape doesn't leave a married woman remedies pursuant to forced sexual intercourse by her husband. It also submitted that the exception doesn't compel a wife to have sexual intercourse with the husband and that the remedy of divorce, including other remedies under the criminal law, is available to her in such situations. So present ये है कि अभी इसकी सुनवाई चल रही है. The hearing is still going on. The court hasn't come to any conclusion and the center has also sought some time ये सोचने के लिए कि इस पे हम क्या whether law shall be brought or not on this offense. तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा कि जरूरी नहीं है इस एक्सेप्शन को हटाने की, क्योंकि अगर ये क्राइम अगर अनरिपोर्टेड है और या इसके लिए कोई रेमेडी अगर प्रोवाइडेड नहीं है, बट स्टिल द वुमन हैज द राइट टू गो फॉर डिवोर्स, जो कि वो क्रुएल्टी के अंडर भी वो उसे क्लेम कर सकती है. सो द नेक्स्ट केस इज enrich children in street situations suo moto writ petition so and so. The Supreme Court asked the states to complete the identification and rehabilitation process of the children in street situations, also in short form known as CISS at the earliest. Looking at the slow progress in the identification process, the Apex Court directed all the district magistrates to involve special juvenile police units, district legal services authorities and voluntary organizations in identification of the CISS. The court also directed the states to frame a policy for rehabilitation of street children after their identification with the guidance of the NCPCR
दैट मीन्स अ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये केस कुछ ऐसा है नहीं, इसमें बस डायरेक्शंस दिए गए हैं टू आइडेंटिफाई द स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड टू rehabilitate them under the guidance which have already been formulated by the National Commission for Protection of Child Rights। तो इसमें थोड़े गाइडलाइंस दिए गए हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। Then the next case is Reshma versus Union of India through Ministry of Women and Child Development, Government of India and others. The Delhi High Court has sought response of the central government in a review petition seeking to declare the assumed absolute discretion of the Muslim husband to give divorce talaq ul sunnat to his wife at any time without any reason or advance notice to her as arbitrary, anti-sharia, discriminatory and unconstitutional। काफी इंटरेस्टिंग सा केस है। ऑलरेडी एक डिसीजन दिया जा चुका है बाय द सुप्रीम कोर्ट इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2017 का केस था। इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द ट्रिपल तलाक टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो तलाक उल बिद्दत था, पर इसमें a petition who is 28-year-old Muslim woman, a mother of 9 months old child, and who has also been deserted by her husband by pronouncing the triple talaq, has challenged the talaq ul sunnat procedure in Delhi High Court, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भी इशू किया था। तलाक देखिए, जैसे कि मुस्लिम लॉ में आप लोगों को पता है कि डिवोर्स इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द हस्बैंड। तो हस्बैंड कभी भी वो तलाक पढ़ सकता है और वो शादी से आजाद हो सकता है। सो इन दैट केस तलाक उल सुन्नत को भी इसमें चैलेंज किया गया है, बट तलाक उल सुन्नत इज अ रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक for the reason that it doesn't become final at once and there always remain a possibility of compromise between the husband and wife, though it is a revocable form of talaq but still it has been challenged, क्योंकि सबसे पहले इसमें एक मुस्लिम हस्बैंड को बहुत ज्यादा राइट दिया गया है that he can pronounce a talaq at any time without any notice, without any advance notice, which is actually discriminatory and unconstitutional as per the judgment already given by the Supreme Court. Then Disabled Right Group versus Union of India. The Supreme Court directed the University Grants Commission to ensure that guidelines for the ease of access to students with disabilities in universities and colleges across the country are formulated in 8 weeks. ये कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है इन द ईयर 2017। इसमें यूजीसी को एक डायरेक्शन दी गई है टू कम अप with a solution in 8 weeks about how the students who belong from disabled group can access to the university or colleges। तो उनके क्या कहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए, ताकि वो सही से कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके, the UGC has been directed to formulate certain guidelines on it। Then the next case is State of UP through Secretary Excise and others versus मेसर्स मैकडॉवल एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो जजमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। No, not Arbitration and Conciliation Act. A fire accident cannot be termed as an act of God if it didn't happen due to the operation of any external natural forces like storm, floods, lightning or earthquake, the Supreme Court has said. इंटरेस्टिंग केस इसलिए है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को के डिसीजन को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इवन फायर इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल कोई मिसचीफ ना हो, सो दैट फायर इंसिडेंट विल बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का जो हम रियल इंसिडेंट जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं वो नहीं है, लाइक स्टॉर्म, फ्लड्स, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। So this judgment has been given by a 3-judge bench headed by Justice A.M. Khanwilkar, made this observation. The present one had not been a case where anything related with the forces of nature like storm, floods, lightning or earthquake had been in operation or caused the fire. इसमें क्या है, एक warehouse है, the warehouse was owned by McDowell and Company Limited, तो उसमें आग लग जाती है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती है कि that fire incident broke out not out of any mischief, तो इसलिए कहा गया इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि कहीं से भी सामने नहीं आया कि वो आग लगी कैसे, आग अपने आप ही लग गई, बिकॉज ऑलरेडी देयर वर सेफ्टी मैकेनिज्म्स, सब कुछ उनके पास था। कि जब जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि क्या कहते हैं, कोई भी वेयर हाउस में जब आग लगती है तो ऑलरेडी उसकी एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनी रहती है, जैसे कि
वाटर शावर्स होते हैं कि जैसे आग लग गई वैसे ही वो चलना शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। सारे सेफ्टी मैकेनिज्म थी, लेकिन फिर भी आग अपने आप ही लग जाती है। देन नील ऑरेलियो न्यूज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो बहुत ही इट इज एक्चुअली मोस्ट फेमसली नोन एज नीट पीजी केस, जो कि चला है कुछ दिन तक। हमने इसे क्या कहते हैं न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी देखा था। अब देख लेते ये केस है क्या। The petitions were instituted on 24th of August 2021 to challenge the validity of the notice dated 29th of July 2021. The notice implements a 27% reservation for other backward classes, non-creamy layer, and a 10% reservation for the economically weaker section, while filling up 15% undergraduate and 50% postgraduate all India quota seats in pursuance of the national eligibility cum entrance test. The notice takes effect from the current admission year 2021. एक notice like it has been issued by the central government on 24th of August 2021, जिसे 29th of July 2021, जिसे चैलेंज किया जाता है बाय द पिटिशनर ऑन 24th of August 2021। उस नोटिस के मुताबिक 27% रिजर्वेशन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता है और 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज in 15% in undergraduate courses as well as 50% in postgraduate all India courses in NIT. What was the issue? Criteria provided by the OM of 2019 of using 8 lakhs as the cut-off income limit for identifying EWS. देखिए, आप लोग को पता है कि how EWS are determined by taking that income criteria of 8 lakhs per family. अगर किसी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा अगर नहीं है, सो दैट फैमिली कम्स अंडर ईडब्ल्यूएस। और ये सेम क्राइटेरिया इज आल्सो बीन यूज्ड बाय द ओबीसी टू डिटरमाइन देयर क्रीमी स्टेटस, वेदर दे आर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो ये दोनों चीजें सेम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है और ओबीसी के लिए भी सेम है। तो इसलिए से चैलेंज किया गया ये क्या है कि इट इज एक्चुअली वायलेटिंग देयर राइट्स। ओबीसी इज एक्चुअली चैलेंजिंग दैट इट इज वायलेटिंग आवर राइट्स बिकॉज income criteria for determination of the category is just the same. Then what is the directions? We accept the recommendation of the Pandey committee that the criteria which have been stipulated in OM 2019 be used for 2021 to 2022 in order to ensure that the admission process is not dislocated. Pandey committee के द्वारा ही ये डिटरमाइन किया गया था कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को कि हम कैसे ईडब्ल्यूएस को ये करें, क्या कहते हैं कि डिटरमाइन करें कि that person actually belongs from that category, that weaker section. तो ये पांडे कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। काउंसिलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नीट पीजी 2021 एंड नीट यूजी 2021 शैल बी कंडक्टेड बाय गिविंग इफेक्ट टू द रिजर्वेशन एज प्रोवाइडेड बाय द नोटिस डेटेड 29 जुलाई 2021। तो इसमें काउंसिलिंग प्रोसेस जो है बोथ फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों का अलाउ करा दिया गया। द क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ईडब्ल्यूएस notified by OM 2019 shall be used for identifying the EWS category for candidates who appear for the NIT PG 2021 and NIT UG 2021. जो क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया था by this notification number OM 2019 for identification of the EWS, इसी को बस इस 2021 से 2022 के सेशन के बीच में ही यूज किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। The validity of the criteria determined by the Pandey Committee for identification of EWS would prospectively for the future be subject to the final result of the petitions. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक डेट देते हुए इन दी मार्च की जो पांडे क्राइटेरिया ने जो एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया बनाया है टू डिटरमाइन द EWS कैटेगरीज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, still the case is still not decided. So these are reason why Supreme Court has partially allowed it, but it will decide on the issue of whether the criteria or whether determination of EWS is correct or not, or the validity of the EWS reservation is still pending. And in the meantime, the central government can go ahead with the counseling process. Then the next case is Haryana Tourism Limited versus Messrs Khandari Beverages Limited. तो यही वो केस था, वो आर्बिट्रेशन वाला केस था. सो आई एक्चुअली मिक्सड अप विद दैट एक्ट ऑफ फायर केस. An arbitration award can be set aside only if the award is against the public policy of India, the Supreme Court has said. So Supreme Court इसमें ये कहा कि कोई भी arbitration award जिसे हम set aside करा सकते हैं under section 34 of the Arbitration Conciliation Act, it can only be allowed if it is
against the public policy of India. A bench of Justices A.M.R. Shah and B.V. Nagaratna said the award can be set aside under the Arbitration Act if it is found to be contrary to the fundamental policy of Indian law, interest of country, justice or morality, or if it is patently leaking. So these are the grounds on which the arbitration award can also be set aside. तो इसमें हम जान लेते हैं कि what was the fact. The top court was hearing an appeal filed by the Haryana Tourism Limited against an order of the Punjab and Haryana High Court which set aside a 2005 award passed by the arbitrator as well as the order passed by the additional district judge Chandigarh. Haryana Tourism Limited had invited tenders quotations for the supply of aerated cold drinks at its tourist complexes, and the tender submitted by the Khandari Beverages was accepted. HTL later terminated the contract after dispute arose between the parties and the matter was referred to the sole arbitrator. The arbitrator directed Khandari Beverages to pay 9.5 lakh while the counterclaim launched by it claiming 13.92 lakh was dismissed by the arbitrator. So that was a fact actually. HTL ने एक टेंडर इनवाइट किया था फॉर द सप्लाई ऑफ एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स एट द टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस, तो जिसमें कांधारी बेवरेजेस सप्लाई करती है और उसे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसे टेंडर दिया जाता है, लेकिन बीच में दोनों के बीच में झगड़ा होता है हरियाणा टूरिज्म लिमिटेड एंड कांधारी बेवरेजेस के बीच में, जिसके बाद ये एग्रीमेंट को बिल्कुल क्या कहते हैं निस्तारित कर दिया जाता है. वन साइडेड इट वाज एक्चुअली स्ट्रक डाउन. तो उसके बाद कांधारी बेवरेजेस जाती है आर्बिट्रेशन के लिए और आर्बिट्रेशन उनकी नहीं सुनती है. ऑल्दो दे हैव मेड देयर काउंटर क्लेम ऑफ 13.92 लाख बट देयर क्लेम वाज डिसमिस्ड बाय अ सोल आर्बिट्रेटर, और उसी की वजह से ही इसे सेट असाइड कराते कराते ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है. नेक्स्ट केस इज वसुधा सेठी वर्सेस किरण वी भास्कर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एक्चुअली judgment given by the Supreme Court. The Supreme Court observed that a court, while deciding an issue of child custody, cannot direct a parent to leave India and to go abroad with the child. A writ court, while dealing with the issue of habeas corpus, cannot direct a parent to leave India and to go abroad with the child. If such orders are passed against the wishes of a parent, it will offend her or his right to privacy. The bench of Justices Ajay Rastogi and Abhay S. Oka observed. तो इस केस में ऐसा होता है, देयर वाज अ माइनर चाइल्ड और माइनर चाइल्ड को उसकी मदर मतलब कि इंडिया लेकर आती है फॉर गेटिंग सम मेडिकल ट्रीटमेंट. उसके बाद और उसका जो फादर जो रहता है जो माइनर चाइल्ड का, ही वाज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. तो वहां से ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में फाइल किया जाता है टू टेक बैक द कस्टडी ऑफ दैट माइनर चाइल्ड. और उसमें मदर को भी डायरेक्शन दी जाती है कि वो माइनर चाइल्ड के साथ वो दोबारा लौट जाए यूएसए में उनका बच्चे का बाप रहता है. लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है दैट इट कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज अगर ऐसा हुआ जाता है इट इज अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द पेरेंट. On behalf of mother, it was contended that the welfare principle would be in balancing the interest of all the members of the child's family. It was contended that the mother was the primary caregiver, must be kept in mind as a person who has legal rights which must be respected and protected. An article by Mr. John Ekelard with some criticism of the welfare principle was relied upon. ये judgment इसीलिए भी बहुत important है because here a principle was applied on which is known as the welfare principle, और ये welfare principle it is based on the article by Mr. John Ekelard. और इसी को एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द मदर कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गो बैक टू यूएसए अलोंग विद द माइनर चाइल्ड बिकॉज दैट्स अ वेलफेयर प्रिंसिपल लाइक इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो इट वुड बी अगेंस्ट द राइट ऑफ हर प्राइवेसी. एड्रेसिंग दिस कंटेंशन द बेंच रेफर्ड टू कनिका गोयल वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली and Pratik Gupta versus Shilpi Gupta and observed that the rights of the parents are irrelevant when a court decides the issue of custody of the minor child. तो जब हम Supreme Court by referring both these cases has actually said that when the issue of custody of the minor child is involved, then the rights of the parents are totally irrelevant. तो ये रहा हमारा आज का सेशन. मैंने आज टोटल आपको आपके साथ 8 केसेस डिस्कस किया है जो कि अब तक इस डेट तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है. एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.